वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाई ब्लू इज सो रेयर। ये वीडियो काफी दिनों से पेंडिंग थी। मैं सोच रहा था कि ये वीडियो देखूं, पर कभी मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाया। अभी जैसे आपको पता होगा, मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, अपने कॉलेज लाइफ को मेंटेन कर रहा हूँ, अपने यूट्यूब सो कॉल्ड करियर। तो जो भी है, जैसा भी है, बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है। देख रहे हो, मैं फॉर्मल पहन के बैठा हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरे को जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करना है, फिर खा पी कर मेरे को कॉलेज जाना है। तो इसीलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नेक्स्ट एक दो वीडियो में यही सेम ड्रेस लगे तो समझ लेना कि मैंने एक ही साथ 2-3 वीडियो रिकॉर्ड की है आप लोगों के लिए, ताकि आपको कंटेंट की कमी ना हो और मैं भी जल्दी हर हफ्ते वीडियोस ला सकूं। बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो है इट्स ओके टू बी स्मार्ट चैनल से, और इनके ऑलमोस्ट 4.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इस वीडियो पे हैं 15.2 मिलियन व्यूज। समझ रहे हो, मतलब इतने सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा है। और अगर आपको इस वीडियो में पीछे साउंड आया ऐसा थोड़ा ठक ठक की, तो समझ लेना कि काम चल रहा है। वो थोड़ा हॉस्टल में कुछ कारपेंटरी का काम चल रहा है, तो पीछे से आवाज आएगा तो प्लीज इग्नोर कर देना। कोशिश करूंगा कि एडिटिंग में वो आवाज हटा दूं, और अगर नहीं हटती तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सह लेना यार। दिल पे पत्थर रख के वीडियो को देख लेना प्लीज यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। लाइक वाइक भी ठोको जाके। तो चलो जल्दी से वीडियो को प्ले कर लेते हैं। There are no blue tigers, no blue bats, no blue squirrels, no blue dogs. Even blue whales aren't that blue. Animals come in pretty much every color, but blue seems to be the rarest. What's cool though is when we do find a blue animal, they're awesome looking. Nature doesn't do halfway with blue. To understand why this is, एक्चुअली ये तो बहुत ही ज्यादा ही सच्ची बात है। मतलब क्योंकि मैंने बचपन में बहुत ही ज्यादा नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी देख रखी है, तो मैंने जितने भी ब्लू एनिमल्स देखे हैं वो सारे ऑलमोस्ट सारे बटरफ्लाई हैं, या फिर कोई कीड़ा हो गया, इंसेक्ट हो गया, या फिर कोई फ्रॉग हो गया, या फिर कुछ और। मतलब ऐसे ज्यादा जनरली ब्लू कलर नहीं होता, जो इस वीडियो में साफ साफ इन्होंने बताया। पर जानेंगे कि ये क्यों है, कि ब्लू क्यों रेयर है। We're gonna journey through evolution, chemistry, and some very cool physics. But first, we're gonna need to understand why animals are any color at all. And to do that, we need to go look at some butterflies. Because butterflies are awesome, and if you don't think so, you're wrong. This is Bob Robbins. He's curator of Lepidoptera at the National Museum of Natural History in Washington, D.C. Butterflies are awesome. Make no mistake They are awesome, but मेरे favorite नहीं. about it. They're a group of moths that evolved to be active during the day. And if you're active during the day, that means that you have an advantage. You can use light to communicate. You probably realize this, but out of all insects, butterflies display the brightest and most detailed patterns. And there's a good reason for that. The colors in butterfly wings deliver messages like, I'm toxic, or I'm a male and this is my territory. But not all butterfly colors are created equal. If we zoom way in on a butterfly wing, we see the colors come from tiny scales. It's actually how moths and butterflies get their scientific name. ये वीडियो तो सच में काफी ज्यादा ही इन्फॉर्मेटिव है यार। मैंने सोचा नहीं था ये इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, पर ग्रेट चॉइस ऑफ वीडियो आई गेस। Oranges, reds, yellows, browns, those scales all contain pigments, organic molecules that absorb every color except what we see. Black scales absorb all colors. Animals from butterflies to birds to you and me don't make these pigments from scratch. They're made from ingredients in our diet. You might know this thanks to flamingos. They're born gray but turn pink thanks to pigments called carotenoids in crustaceans they eat. So when it comes to ये बात भी मेरे को नहीं पता थी यार। ये वीडियो तो काफी ज्यादा ही इन्फॉर्मेटिव निकली यार। सही है। ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लेते आऊंगा, तो इसी के लिए सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आप लोगों को भी जानने को मिले जो मैं जान रहा हूँ। colors, you are what you eat, but not so for blue. Blue is different. If you move the camera, if you can see that the color changes as you move the camera. It does. It's like a hologram thing. Yeah. And this is because there's no blue pigment in these butterflies. Wait, so they're blue, but they're not really blue. That's correct. Yes. You're lying to me, butterflies. देखते हैं, शायद ये बात सही हो कि हमको ब्लू देखते हैं, ब्लू है नहीं एक्चुअली। These are blue Morpho butterflies, maybe the prettiest butterflies of all. I mean, they did make it the butterfly emoji.
The blue color isn't from a pigment. The blue comes from the shape of the wing scale itself. And when I learned how this works, it kind of blew my mind. If we zoom way in on a blue wing scale, we see these little ridges. If we slice across the scale and look closer, we see those ridges are shaped like tiny Christmas trees. The arrangement of branches is what gives Morpho wings their blue color. When light comes in, some bounces off the top surface, but some light passes into the layer and reflects off the bottom surface. For most colors of light, waves reflecting from the top and bottom will be out of phase. They'll be canceled out, and that light is removed. But blue light has just the right wavelength. The reflected light waves are in sync, and that color makes it to our eye. This hall of mirrors only lets blue light escape. There's even a pigment at the base that absorbs stray red and green light to make the blue even more pure. That's how we get this awesome iridescent blue, the microscopic structure of the wing itself. All of this happens because of the way light bends when it moves from air into another material. So if we fill all those tiny gaps with something other than air, like alcohol, the blue disappears. Technically, this changes the वाह यार, पूरी रिसर्च कर रखी है इस वीडियो पे. ये है हाई एफर्ट कंटेंट. index of refraction, but in plain English, that means blue light is no longer bent the right way. The microscopic light filter is broken until the alcohol evaporates and the color returns. But these butterflies live in the rainforest. You'd think they'd lose their color anytime they got wet, right? Well, watch this. These wing scales are made of a material that's naturally water resistant. They stay blue in any weather. So what about this blue jay feather? If we look through it, the color completely disappears. No blue pigment. Each feather bristle contains light-scattering microscopic beads, spaced so everything but blue light is canceled out. Unlike the highly ordered structures we find in butterfly wings, these feather structures are more messy, like a foam. So instead of changing as we move, the color's more even from every direction. Peacock tail feathers, again, it's the shape of the feather, not pigment. But the light reflecting structures here are more ordered, like a crystal, so it's brighter from certain angles. There's even a monkey. Whoa, 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 let's keep this PG. Even that color is made by the adding and subtracting of light waves thanks to structures in the skin. And yes, even your blue eyes are colored by structures, not pigments. Outside of the ocean, almost exclusively, the bluest living things make their colors with microscopic structures, and each one's a little different. No vertebrate, not a single bird or mammal or reptile that we know of, makes a blue pigment on its body. In fact, there's only one known butterfly that's cracked the code for making a true blue pigment. So अभी तक हमने जितना देखा है कि ब्लू पिगमेंट नहीं बन रहा है किसी भी एनिमल में, बस उनके स्केल्स या फेदर्स का या फिर कुछ पार्ट्स का स्ट्रक्चर ऐसा है जो ब्लू लाइट एमिट करते हैं, मतलब जिन पे लाइट गिरने से वो बाकी सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बस ब्लू लाइट को रिपेल कर देते हैं. तो उसी के वजह से हमको वो चीज़ें ब्लू दिखती. तो प्रॉपर बात यही है और देखते हैं आगे शायद कोई इसने जैसे बताया कि एक बटरफ्लाई है जो ब्लू पिगमेंट फॉर्म करती है, तो क्या सच में करती है या फिर ऐसे बस उसका भी स्ट्रक्चर ही है. Blue as a pigment in nature is incredibly rare, but there's one exception so far that we know about, and these are over here called the olive wings. They have evolved a blue pigment, and they're not very common, and we don't know very much about them, and I don't know of any other blue pigments. That's a really special butterfly. But why is almost all of nature's blue made from structures and not pigments, like everything else? ये तो मेरे भी दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्यों स्ट्रक्चर से बना है पर पिगमेंट से क्यों नहीं बना है. क्यों ब्लू पिगमेंटेशन क्यों नहीं हो सकता जब ग्रीन पिगमेंटेशन हो सकता है, बाकी सब भी हो सकता है, तो ब्लू पिगमेंटेशन क्यों नहीं हो सकता. देखते हैं शायद इस वीडियो में आंसर भी मिल जाए. I've asked this question to several scientists that study color, and here's their best theory so far. At some point way back in time, birds and butterflies evolved the ability to see blue light, but they hadn't yet evolved a way to paint their bodies that color. But if they could, it'd be like going from
early beetles to Sgt. Pepper's beetles. It meant new opportunities for communicating and survival. Creating some blue pigment out of the blue would have required inventing new chemistry, and there was no way to just add that recipe to their genes. It was much easier for evolution to change the shape of their bodies ever so slightly at the microscopic level and create blue using physics instead. They solved a biology problem with engineering. What I love about this is that these colors have fascinated curious people for hundreds of years. After looking at peacock feathers through one of the first microscopes back in the 1600s, Robert Hooke wrote, "These colors are onely fantastical ones." Even Isaac Newton noticed there was something unusual about these blues, and scientists have been studying them ever since, not only because the science is interesting, but because it's beautiful. Thanks for watching, and stay curious. श्योरली यार, मतलब वीडियो तो काफ़ी अच्छी थी जितना भी अभी हमने देखा है। इसके बाद शायद से थोड़े ब्लूपर्स आएंगे क्योंकि उसने लिखा था, तो ब्लूपर्स भी हम लोग थोड़ा स्किप करने वाले हैं क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है। तो जितना भी हमने वीडियो में देखा काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल था, काफ़ी ज़्यादा हाई एफर्ट कंटेंट था, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की गई है इस वीडियो के पीछे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको भी पसंद आया तो इनका चैनल का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। और बस यार, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।